Today I am going to discuss the simplex method for solving linear programming. Simplex method is an algebraic method. Actually, if the variable number of variables is 2, if the number of variables are 2, then it can be solved by graphical method. But if the number of variables increase to more than 2, then it is very difficult to solve by graphical method. That's why you should know how to solve by algebraic method or simplex method. This is the problem which I have to solve today. Problem क्या है? Maxima is z. This is the function. Maxima is z equals 7x1 plus 5x2. Subject to these are the constants. How you solve it? Okay. Now I am going to solve it. First, you have to convert the inequalities. This is inequalities because less than is equal to. First, you have to convert the inequalities to equalities by inserting slack variables. As it is a less than type, that's why you have to add. This is the slack variables x3 for x3 for equation 1 and x4 for equation 2 to make it is equal to. That's why slack variables I have written here x3 and x4. Slack variables means unutilized materials or resources. Suppose this is x1 plus 2x2 less than is equal to means if you add something then only it will be is equal to 6. In this case x3 variable is used to make it is equal to or same is equal to 6, and this is called slack variables. Why it is slack? Because it is unutilized portion. It is unutilized materials to make it is equal to 6. For equation 2, x4 is the slack variables. And what is the implication of this slack variables to the objective function? As x3 represents for unutilized resources, that's why the coefficient taken is 0 into x3. For x3 unutilized resources or slack variables, the coefficient is 0 into 0 is the coefficient, means this unutilized resources is not contributing anything to the objective function. Similarly for x4 also 0 into x4, because x4 is also the unutilized resources or slack variable or constraint 2, and that's why 0 into x4. In this way you have to revise the objective function also. Now if you write the constant in the matrix form, then it will be like this: 1 4 2 3 1 0 0 1 in this way. Because row into column, if you multiplied this row into column, then this will be this. Row into column means 1 into x1 plus 2 into x2 plus 1 into x3 plus 0 into x4 is equal to 6 in this way. So this is the matrix A. You can say AX is equal to B. B is this matrix. This is the matrix for the constant. And objective function you can write in this way, because row into column 7x1 plus 5x2 plus 0 into x3 and 0 into x4. You can write this in this matrix form. And finally, actually the problem can be represented as maximize z is equal to cx. This is z is equal to cx subject to ax is equal to b. Now how we'll solve? By application of simplex method that I'm going to show you. Actually, first we have to put all this matrix and this matrix in a simplex table. How it will be put, that I am going to show you. Okay. Actually, you have to use the entire space. That's why using this problem. Okay. Now you have to put the matrix. You have to put the matrix in the simplex table. How the simplex table will be? You have to put the value in the simplex table. Suppose this is the simplex table. Table 1. You can note it as table 1. Okay. Table 1. The matrix A
x1, x2, x3 and x4. And this is xb, the basic variables. This is the cost matrix. Okay, and 1 4 2 3 2 3 1 0 and 0 1. The first simplex table will be like this. Okay. Now, and the cost matrix will be written here. 7 5. The objective function is 7 5 0 and 0. Actually, this is the cost matrix, that is Cx, the objective function, and this is Ax. A means the matrix 1 4 2 3 1 0 0 1, but which I have already shown just now. And what is here is the problem. Problem क्या है? Problem is this. Here two equations are given. दो equations है, but number of variables are 4. That's why to solve it in unique way, you have to put at least two variables is equal to 0. दो variable को 0 कर देना है, because two variables, two equations you can solve in unique way. But in this case यहाँ पर आपको क्या है, चार वेरिएबल है, इक्वेशन दो था तो हमने मिटा दिए हैं जस्ट पहले. तो दो इक्वेशन है, चार वेरिएबल, उसको सॉल्व करने के लिए दो वेरिएबल को 0 करना है. तो फॉर इजी सॉल्विंग तो क्या करते हैं हम लोग, x1 x2 को हम लोग 0 कर दिए. x1 इज इक्वल टू 0 एंड x2 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग लेकर चलते हैं. इट विल बी इजी टू सॉल्व आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बिकॉज देखो अगर ऐसा है 1 0 0 1, इस तरह से इधर क्या है x3 एंड x4, that is equal to 6 and 12, 6 and 12. So it will be easy to solve row into column, that is x3 is equal to 6 and x4 is equal to 12. That's why क्या करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग खोजते हैं और बाकी रिमेनिंग जो वेरिएबल्स है उसी को हम 0 कर देते हैं. तो दो वेरिएबल को रखना है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए ये दो वेरिएबल हो जाएगा और x1 x2 को 0 कर दिया करके उनको आगे निकालना है. तो कैसे करेंगे, तो इज इक्वल टू x3 का सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन विल बी x3 एंड x4 इज इक्वल टू 6 एंड 12, और कॉस्ट इसका रिलेटेड कॉस्ट जो है दैट इज 0, इसी को भी 0 लिया. तो इस तरह से हमने फर्स्ट टेबल बनाया. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इसका बाद यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंडेक्स. इंडेक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, रो इनटू कॉलम, दिस इनटू दिस. यहाँ पर रफ वर्किंग दिखाते हैं, दिस इनटू दिस, 0 into 1 प्लस 0 into 4, 0 into 4 रो इनटू कॉलम माइनस this minus 7, that is equal to minus. In this way you have to find, this is called index, this is called index row. index row कैसे कैलकुलेट करना है, अगेन आई एम रिपीटिंग, धीरे धीरे करके करते हैं क्योंकि इट्स थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है. तो रो इनटू कॉलम, इन दिस केस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, तो टोटल बनेगा -7 माइनस this matrix 7. So same process you have to repeat for this vector or x2 variable. Then how you calculate 0 into 2, 0 into 2 plus 0 into 3, 0 into 3 minus 5, minus 5 is equal to minus 5, minus 5, or 1 into 0, so that is 0 is 0, and this into this plus 1 into, the process is same 0. तो ये फर्स्ट स्टेप करने के बाद यू विल चेक द इंडेक्स रो मस्ट बी आइदर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, आइदर 0 और ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0. अगर कोई नेगेटिव आता है देन यू हैव टू प्रोसीड फर्दर. और कैसे करेंगे दैट आई विल डिस्कस. तो यहाँ पर इंडेक्स रो का सारा एलिमेंट 0 नहीं हुआ, दो नेगेटिव है. देन व्हाट यू विल डू, सिलेक्ट द मैक्सिमम नेगेटिव, व्हिच इज द मैक्सिमम नेगेटिव, दिस वन यू सिलेक्ट this, and this is called key column. This is called key column. This is called key column. That means this variable will come to the basis, means decision variable में लाना है. तो ये कहाँ पर जाएगा, ये जो है ये बेसिस पे आएगा.
मीन्स डिसीजन वेरिएबल पर आ जाएगा। तो ये x1 जो है यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर आएगा, हाउ वी डिसाइड इट। तो फॉर दैट रीजन अब वो क्या करें, यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो। रेशियो किस तरह से, 6 डिवाइडेड बाई 1, 6 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 6 एंड 12 डिवाइडेड बाई 4। दिस इज की कॉलम। की कॉलम का सारा एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग बेसिक जो वेरिएबल्स का वैल्यू है उसी से डिवाइड कर देता है। तो 12 डिवाइडेड बाई 4, इट इज हाउ मच, इट इज 3 एंड सिलेक्ट द लोएस्ट रेशियो। सिलेक्ट द लोएस्ट ratio. That means this is the key element. This is a key column and this is a key element. That means in place of x4 you have to bring this variable. It will be in the decision variable. Okay, and you have to divide the entire row by this key element. वो हम यहाँ पर करते हैं, देखो how just for space I am raising this. So in place of this is x3 and this is in place of x4, x1 will come, x1 will, and divide the entire row by this key element. This is called key element and the column is called key column. So divide करने से 12 by 4 means 3, 4 by 4 is 1, 3 by 4 you have to divide the entire row by 4. We know 0 by 4 is 0 एंड 1 by 4। हम लोग जानते हैं रो का अगर बोथ साइड सेम एलिमेंट से डिवाइड मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चेंज नहीं, मैथमेटिकली यू कैन डू इट। तो वही हमने किया, क्योंकि यहाँ पर हमने की एलिमेंट से इंटायर रो को डिवाइड कर दिया। तो पर्पस क्या है कि हमको फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो यहाँ पर 1 है, दैट मीन्स यहाँ पर डेफिनेटली 0 लाना पड़ेगा, दैट इज द प्रोसेस। तो यहाँ 0 कैसे लाएंगे, न्यू रो को, जब x3 का कोफिशिएंट क्या हो जाता है, x3 का 0 एंड x1 का व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, x1 इज 7, दिस इज 7। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दिस रो। आपको विद द हेल्प ऑफ दिस रो, ये रिवाइज्ड रो हो गया, विद द हेल्प ऑफ दिस रो क्या करेंगे कि ये यहाँ पर 0 आ जाएगा, दैट इज द प्रोसेस। देखो कैसे करना है। तो ये ओल्ड रो है, राइट इट ओल्ड, 6 1 2 1 एंड 0, दिस इज द ओल्ड रो। तो व्हाट यू हैव टू डू, तो सेकंड पोजीशन में 0 लगा है, विद द हेल्प ऑफ दिस यहाँ पर 0 लगा है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर 0 आ जाएगा। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट द एंटायर रो, जो रिवाइज्ड नया रो बना है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 से 1 अगर डिवाइड माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। देखो कैसे, 3 1 सिंपली माइनस कर देते हैं तो 0 मिलेगा, 3 by 4 0 1 by 4। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो विल गेट माइनस माइनस, ये 3 0 तो 4 do not, ये 5 by 4, this is 1 minus 1 by 4। अगर यहाँ पर से 4 रहता, देन व्हाट यू विल डू, अगर यहाँ पर 4 रहता तो क्या करते, तो इससे 4 से मल्टीप्लाई करके तब सब्ट्रैक्ट करते, तब 0 मिल जाता। जैसे कि यहाँ हाफ रहता, अगर यहाँ पर हाफ था, सपोज करो कि यहाँ हाफ है, तो हमको 0 बनाना है, यहाँ पर 0 करना है, तो क्या करते हैं, तो जो रिवाइज रो है तो 1 है ना, तो हाफ से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। दिस इज द प्रोसेस, आगे भी दिखाएंगे। तो 3 0 5 by 4, 5 by 4 रिवाइज रो जो है 1 minus 1 by 4। इज इट क्लियर? क्योंकि मैं इसको इरेज कर देंगे इसलिए, क्योंकि जगह का जरूरत है इसलिए। तो क्या किया मैंने, फर्स्ट क्या किया, की एलिमेंट्स है, फर्स्ट आफ्टर द फर्स्ट स्टेप विल चेक दिस इज कॉल्ड इंडेक्स रो। अगर इंडेक्स रो का सारा एलिमेंट आइदर 0 और पॉजिटिव आ जाता है, देन यू विल स्टॉप एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है यहाँ पर मिलेगा, ये बेसिस जो है बेसिक सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा। एक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर x3 = 6 x4 = 12, अगर सारा पॉजिटिव आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसमें नेगेटिव भी आ गया। तो नेगेटिव अगर एक रहता तो मैं उसको सिलेक्ट करता, वही की कॉलम हो जाता। बट इन दिस केस यू सी जो 2 नेगेटिव है, देन यू विल सिलेक्ट द मोस्ट नेगेटिव वन। व्हिच इज द मोस्ट नेगेटिव वन, दिस इज द मोस्ट नेगेटिव वन। तो ये जो की कॉलम है, की कॉलम क्या इंडिकेट करते हैं, ये जो वेरिएबल है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिसीजन में आएगा। ये पहले नहीं था डिसीजन में, यहाँ पर सारा डिसीजन वेरिएबल्स है, तो ये इसको लाना है। लेकिन इसका 2 प्लेसेस है, वो कहाँ पर जाएगा, तो ये डिसाइड करने के लिए यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियोज। एक की कॉलम का सारा एलिमेंट्स है, ये जो बेसिक वेरिएबल्स का वैल्यू है इसको डिवाइड करके रखना है। जो लोएस्ट है इसको सिलेक्ट करना है। जो 6 डिवाइडेड बाई 1, ये 6 रेशियो हो गया। 12 डिवाइडेड बाई 4 3 है, तो लोएस्ट इज 3, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड की एलिमेंट।
तो इस इंडिकेट करता है कि ये वेरिएबल हट जाएगा, यहाँ पर की आ जाएगा। जैसा की वेरिएबल जो x1 यहाँ पर ला रहे हैं और इंटायर रो को मैं ये की एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 लाना है। ऑलवेज विल ट्राई टू फाइंड आउट 0 1 1 0, दैट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स टू फॉर्म आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 4 से डिवाइड करेंगे इंटायर रो को, 3 1 3/4 0 1/4। अब ये रो का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाउ वी फाइंड आउट दिस रो, तो टेक द ओल्ड रोज 6 1 2 इन दिस वे, विद द हेल्प ऑफ द न्यू रो क्या प्रोसेस करेंगे कि ये 0 आ जाएगा। दिस इज द चेक, उनको 0 लाना है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, दैट्स वाई यहाँ 0 हमने पुट कर दिया। पहले क्या करेंगे, तो ये ओल्ड रो लिखे हैं, तो यहाँ पर कैसे 0 करना है। अगर मैंने न्यू रिवाइज रो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 0 आ जाता है। मैंने पहले भी बताया, अगर यह हाफ रहता तो क्या करते हैं, तो इससे इंटायर रो को मैं हाफ से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करते हो ओल्ड से, तो 0 आ जाता। तो यहाँ तक हो गया। तो अगेन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स रो। आई एम यूजिंग दिस, ये रफ वर्क है, दिखाना पड़ेगा बट स्पेस शॉर्ट है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इट। तो इंडेक्स रो मीन्स ये वैल्यू निकल रहा है। द प्रोसेस पहले भी बता, दिस इंटू दिस, एक एक करके दिखा रहे, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 1 माइनस 7 दैट इज 0 हो रहा है। सेकेंड, दिस इंटू दिस, 0 इंटू दिस 0 एंड दिस इंटू दिस, 21/4 माइनस 5 that is equal to 4, that is 21 minus 20 is equal to 1/4. This is 1/4. Again I am repeating, this into this, that is 0 plus this into this, 21/4 minus this coefficient minus 5. This is the process. If you do this, then you will get 1/4. For this part you will do 1 into 0 0 plus 7 into 0 0 1 into 0 plus 7 into 0, total जो है minus 0 it is 0, ये 0. Similarly this into 0 0 plus 7/4 minus 0, that is 7/4. Now check whether all the elements of the index row is greater than is equal to 0 or not. In this case all the elements are 0. This is actually zj minus cj. This is called zj minus cj, index row value. All are greater than zj minus cj, greater than is equal to 0. This is the condition for optimum. That's why we have reached to the optimum. And what is the solution? The solution will be x1 is equal to 0. X1 is equal to 3, but in this basis variable x2 is not available. इसका मतलब है कि x2 का वैल्यू 0 है, x2 is equal to 0, और x3 is equal to 3. x3 this is a slack variable 3, and x4 also, x4 जो कि 0, जो यहाँ पर नहीं है उसका वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर उसको हम लोग 0 पुट किए, तो ये 0 है, and x3 is equal to 3, और x2 भी नहीं है तो x2 0, x1 is equal to 3. And what will be the value of the objective function z? Maximized value z is equal to 7x1 plus 5x2 plus 0 into x3 plus 0 into x4. That's why 7 into 3 plus 5 into 0 plus 0 into x3 का value 3 plus 0 into x4 is 0, that is 21. That will be the answer. The answer is, the maximum value is 21, or decision value x1 is equal to 3 and x2 is equal to 0. This is the answer. Okay? Thank you.